Very good morning students, this is your SST period, and in the last class we learned how British rule mostly had a negative impact on India. So today we will try to understand how this negative impact united Indians to fight against the British. So let us watch a video to understand this better. Watch it carefully and you can write the important points in your rough notebook. Emergence of Nationalism in India. Hello students, we all live in India and identify ourselves as Indians. But this was not always the case. Before the arrival of the British in India, the people of India used to identify themselves with the rulers who ruled the kingdoms they lived in. For example, the kingdoms they lived in Akbar's kingdom, identified themselves as citizens of the Mughal Empire. What changed then? Why did the people start recognizing themselves? अब यहाँ पर देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे तो हम इंडियंस नहीं कहलाते थे। हम हमारी जो है कंट्री पे जिसका भी रूल होता था हम उसके ही अंडर आते थे। तो कैसे ये चेंज हुआ, हमें इंडियंस कैसे कहने लगे, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऐसा हुआ। तो लेट्स नो अबाउट इट। Themselves as Indians. It happened because of the emergence of nationalism during इसका जो मेन रीज़न था कि हम इंडियंस कहलाने लगे थे, तो मेन रीज़न था जब नेशनलिज्म हमारे यहाँ आया था। एमरजेंस हुई थी किसकी? नेशनलिज्म की। the British rule. Let us begin by understanding what nationalism means. In very simple terms, it refers to the people of a country coming together regardless of language, culture, caste, gender or region and identifying as one nation state. अब देखो, नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। जब सभी लोग इकट्ठे आते हैं रिगार्डलेस कास्ट, उनकी कास्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी एज, उनका कलर, कोई भी मतलब उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो सभी इकट्ठे आते हैं और यूनिटी दिखाते हैं, एक माने जाते हैं, तो उसको हम नेशनलिज्म बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? As a nation, the resources and systems of the country are meant for all of us, irrespective of our differences. Let's understand how the British rule led to the emergence of nationalism. During the British rule, the people of India realized that the resources of their country were not being used for their own progress. Instead, they were being used for the development of Britain. अब यहाँ पर देखो, इंडियंस को लगा था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी प्रोग्रेस के लिए यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, वो यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन। Imagine if our government brings out policies that impoverish us while contributing to the development of some other nation. How would you react? Yes, we would protest against the government. अगर हमें पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ के लिए बुरा लगेगा और हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे फॉर इट। And we would not re-elect them to power in the next elections. Today, we have the right to vote. But when the British ruled India, Indians did not have that right. सबसे पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो वी हैव अ राइट टू वोट। हम अपनी मर्ज़ी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। बट जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पे इंडियंस के पास ये राइट नहीं था कि दे कैन वोट और दे कैन पार्टिसिपेट इन वोट। Just like the imaginary government we talked about, the British government in India used the resources of our country for the development of Britain. They introduced policies that impoverished Indians. One such policy was the ban on Indian textiles in Europe. So ये हमने प्रीवियस यूनिट में भी की है, यूनिट नंबर 2 में, कि यहाँ पर जो टेक्सटाइल था वो बैन कर दिया गया था। आप सभी को इसका रीज़न भी पता होगा कि इसको बैन क्यों किया गया था। Which destroyed the Indian textile industry. Another way in which the British drained the resources of our country was through taxation systems. They charged high taxes on Indian products
so that finished Indian goods could not reach the British market. अब देखो इनके ऊपर जो हमारी इंडियन की गुड्स एंड सर्विसेज थी इनके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स जो था लगाया जाता था ताकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए. कॉस्ट बढ़ेगी तो वो लोग जो होंगे वो उसको कम खरीदेंगे. While importing raw materials from India at very low costs. Heavy taxes collected from the Indians were also a source of income for the British, which they hardly used for the development of. अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स की इनकम क्या थी तो इनकम क्या था उनका जो हमसे वो हाई रेट ऑफ टैक्सेस जो हमसे लेते थे वो उनकी इनकम थी. India. Though Indians couldn't remove the British from power since they were not elected, they could see through the intentions of the British to make Britain wealthier at the expense of our country. Apart from that, there were a series of acts and bills passed or rejected towards the end of the 19th century, which caused a huge unrest among the people of India. Let's learn about a few of them. The Arms Act, passed in 1878, prohibited Indians from possessing arms while allowing the British to possess them. The same year, another act known as the Vernacular Press Act was passed, which prohibited the Indian press from criticizing the British government. In addition, a bill that sought equality between the Indians and the Europeans was rejected by the British. Yes, I'm talking about the Ilbert Bill. While the British judges could try Indians in the courts of law, Indian judges were not allowed to try the British. The Ilbert Bill sought equality between the British and the Indian judges in India. However, the rejection of the bill enraged the Indians. It was proof of the racist attitude of the British. Moreover, the British didn't consider. ये कुछ एक्ट्स थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच. जो ब्रिटिशर्स को राइट दिए जाते थे वो इंडियंस को नहीं मिलते थे. जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था. तो ये जो एक्ट्स हैं और जो डिफरेंस इन दोनों में किए जाते थे यू हैव टू लर्न दिस. Indians politically responsible. For a long time, the top government jobs were held only by the British, as they believed that Indians could not be given positions of responsibility. All of these causes and conditions united the people of India against the British and led to the emergence of nationalism. Indians demanded the right to be treated equally and be empowered to make decisions regarding the governance of their country. This nationalism formed the basis of the freedom movement. ओके बेटा, हैव ए नाइस डे. सो ये वीडियो थी. अब मैं आपको कुछ मीनिंग बताऊंगी न्यू वर्ड्स की. उसके बाद आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए दूंगी क्वेश्चंस और आपको रीडिंग वर्क भी दूंगी. ओके, हैव ए नाइस डे.